Welcome students. From today onwards, we will be starting a new lecture series from where we will be covering the highway engineering in shorts, and we will be covering the all the major topics which is being asked in the examinations, competitive examinations like GATE, ESC and state PSC like examination. Okay, so we will be covering all the topics one by one in a very precise way so that it would be easy for the students to revise all the things on a single platform. Okay, now let's first discuss the chapter number 1, that is consisting with the highway development. So in this highway development, the first roads which was developed was the Roman roads, which was developed in year 760 BC, and those roads were built straight regardless of the gradients, and they were built of stone blocks, and the total thickness of those roads were 0.75 to 1.2 meter. Okay, so this question may be asked. The important points which I have experienced or which I have seen in various different types of competitive examinations, that the points which I have highlighted, I have highlighted it with the yellow color, they might be important and they can be asked in the competitive examination as well as in the objective questions of your academic type examinations. Okay, so अगर हम लोग बात करें हाईवे डेवलपमेंट की, ठीक है, तो हाईवे डेवलपमेंट में हमारे पास जो मेजर स्केल पे 5 तरह के रोड डेवलपमेंट्स थे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रोमन रोड्स था जो 760 BC में था, ठीक, एंड दे वर स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेडियंट्स and they were built of the stone blocks. Okay, and the total thickness of those roads was 0.75 to 1.2 meter. like this, एक blocks रखे हुए हैं, उसके ऊपर blocks रखे हुए हैं and ऐसे blocks रखे हुए, and the total thickness of those roads were 0.75 to 1.2 meter. Okay, now the second construction was Tresgute construction, and it was in the year 1775, and the thickness of Tresgute construction was 30 centimeter, and the two parameters, that were subgrade moisture conditions and the drainage, were considered under this Tresgute construction, and the shoulder slope is 1 in 20, whereas the slope of the wearing course is 1 in 45, and the width of that road is 2.7 meter. Okay, the important in this is the thickness 30 centimeter, and what were the two parameters that were considered in this design, that was the subgrade moisture condition as well as the drainage, and what was the recommended shoulder slope, that is 1 in 20, and for the wearing course that was 1 in 45. So this 1 in 45 has been asked in the previous examinations. Now third is the Metcalfe, that is not so much important. Now fourth is the Telford construction, which was developed in 1803, for which the level subgrade of width of 9 meter was recommended, and for the Telford construction, the thickness of the foundation stone were varying from 17 centimeter at the edge to 22 centimeter at the center. Likewise, in if you can say like this कि यहाँ पे ऐसे ऐसे था, and it goes on like 17 centimeter एज पे इधर था, 20 centimeter इधर, फिर ऐसे ऐसे इधर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ इधर फिर आगे डिक्रीज होता जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली एजेस पे 17 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट थी, एंड एट द सेंटर इट वाज 22 सेंटीमीटर. ओके, 40 mm gravel bearing course which was laid at a slope of 1 in 45. And the next important is macadam construction, which is most important among the all fifth, and the questions are basically asked from the macadam construction. That is, the two major parameters which have been considered under the macadam construction was the subgrade drainage and the compaction. So these two parameters are being asked in the examination, what macadam has considered in his construction procedures. Okay, so looking at the macadam construction, they has proposed that the heavy foundation stones are at all not necessary to be placed at the bottom layer. Likewise, in the previous method it was considered to be important or necessary, but here macadam constructed it is not at all required to be placed at the bottom layer, and they have recommended that the stones of size less than 10 centimeter were adopted. Okay, the slope of the subgrade course was equal to the slope of the pavement surface, and this was 1 in 36, whereas in the previous methods we were having the slope of 1 in 45. Okay, and the total thickness from edge to edge center is 25 centimeter. Okay, now let's talk about the second important
topic, that is JACAR committee, and this is mostly asked in the academic examination as well as the competitive examination, that what were the recommendations of the JACAR committee. So JACAR committee was formed under the leadership of Dr. M.R. Jaikar, who was the chairman of the Jaikar committee, and this committee was framed in 1927, where there were certain important recommendations were made by the committee, and the recommendations were like this: the central government should take charge. The central government should take charge in the Jaikar committee, and there were more stress on the 20-year road development plan. Okay, and it the most three important parameter which was recommended, or you can say like the three characteristics or the three recommendations which were recommended by the Jaikar committee was that like this, that there should be a formation of semi-technical official body. Okay, which would be formed to pull technical know-how from various parts of the country to act as an advisory body. Okay, so basically they were the advisory body to recommend certain design features or certain codal provisions. Okay, likewise IRC was framed, and this question is many a times asked have been examination when IRC was framed. So IRC basically stands for Indian Road Congress, and it was and developed in 1934. Okay, so this question has already been asked in the many examination. Also let like IRC के बहुत से हमारे कोड्स होते हैं, जैसे कि let us say if you want to design for the design of, if you want to study about the design of rigid payment, then IRC 58 is there. If you want to study about the design of flexible payment, then IRC 37 is there. Though various you can say like modifications are made, like if you want talk about the 37, then it was 2001, again it was 2015, 2012, again 2015 and 2018. So as far as the advancements in the technologies, there are various changes in the provisions of the design of the methods of payments. Okay, second recommendation, major recommendation which was made by the JACAR committee was there should be the development of finance. Okay, there should be, you can say like the finance body should be there. Okay, and like that basically that had to develop a road fund which was known as the Central Road Fund, and it was developed in 1929. Okay, and the third one was with the research organization. There should be a research organization which should be established to carry out the research and development work, and it should be available for the consultations. Okay, and this was developed in 1950. So if we summarize the things in the JACAR committee, these three major points were there, that is the formation of semi-official technical body that led to the formation of IRC in 1934, and there should be the provision of developing an fund by imposing an extra tax over the road users, and this central road fund was developed in 1929, and a research organization has to be framed out, which was considered as the Central Road Research Institute, and which was developed in year 1950. Okay, now let's talk about the various types of road plans, which many times various questions have been asked from this various types of road plans. Okay, so talking about the road plans, the first road plan is our Nagpur road plan. Okay, under the Nagpur road plan, the roads were classified into 5 categories. Okay, under the Nagpur road plan, the roads were classified under 5 categories, and the year of this road year plan was 1943 to 1963. Many times this question has been asked, what is the duration of the Nagpur road plan? So this was 1943 to 1963, and this was the first road year plan. Okay, the second road year plan was Bombay road plan, and it was in the year 1961 to 81, and the third road year plan was 1981 to 2001. Okay, so we'll be discussing the salient features of all the road year plans. Okay, so under the Nagpur road plan, which was during the duration of 1943 to 1963, the roads were classified into 5 types, like national highways, state highways, major district roads, other district roads, and village roads. And this road year plan
has utilized the concept of star and grid pattern roads. Okay, many times this question has been already asked in the competitive examination which type of road pattern is used in the Nagpur road plan. So where there are various types of road patterns which we'll be covering here, like we have road, if you talk about the road patterns, then that is rectangular or block pattern, radial or star and block pattern, radial or star and circular pattern. So there are various patterns. So this question has been asked in the examination, that the Nagpur road plan utilizes which categorization of road patterns. Okay, under Nagpur road plan, road density was 16 kilometer per 100 kilometer square of area, and there was an allowance of 15% for the agricultural and industrial development. Okay, now looking at the formula for the calculation of national highways, state highways in a major district is by 8 by 8 plus b by 32 plus 1.6 n plus 80 plus d minus r. Though in some of the books the formula may be varying, but the calculations with that the data on the data which is given, and when we calculate the values on the basis of that data, the values will be same. Likewise, in some books in the latest version, you will see that the formulas are changed, but when you will do the calculation, the values will be almost same. Okay, so same is the method for other district roads and village roads. Okay, and what are A, B, and T? A is the agricultural area, B is the non-agricultural area, N is the number of towns with population having 2000 1 to 5000, T is the number of towns with population having 5000, D is the development allowance. Okay, so this development allowance is additionally added. Okay, this development allowance is additionally added to this Nagpur road plan, and this railway length is not considered in the Nagpur road plan. Remember, this minus r is there, so railway length is not considered. Okay, okay, now talking about the second road year plan, that was in the year 1961 to 1981, that was the Bombay road year plan. And the salient features of this Bombay road year plan was that the road density earlier in this Nagpur road plan was 16 kilometer per 100 kilometer square of area, whereas in the Bombay road plan it was 32 kilometer per 100 kilometer square of area. And under Bombay road plan, it 40% of the road length will be surface. This and there were the various features like 40. The major various features which I'm writing over here is that we are summarizing what is important and what can be asked in the competitive examination. We are not discussing on the basis of academic point of view, because that is written in the books. You can go through the books, and various theories are recommended, but these are the major points which need to be looked out, so that various questions which are friend considering all these points has to be answered. Okay, so if we talk about the Bombay road year plan, then the road density was 30 kilometer per 100 kilometer square of area, and 40% of the road length will be surfaced. Whereas under the Bombay road year plan, the concept of expressways was developed, and there were the expressways length of 1600 kilometer, and the length of railway is considered independent, hence not subtracted. Okay, and under the Bombay road year plan, the development factor was assumed as 5%. Okay, now talking about the third road year plan, that is Lucknow road year plan, and it was in during the duration 1981 to 2001. Okay, the road density for this road year plan is 82 kilometer per 100 kilometer square, okay, area. So if you look at the difference, under the Nagpur road year plan, it was 16 kilometer. Under the Bombay, it is 32, whereas in the Lucknow, it was 82 kilometer per square of area. And in this, the concept of all weather roads were introduced. Okay, with the concept of all weather roads were introduced with the population greater than the 500. Okay, the expressway's length under the Bombay road year plan was 1600 kilometer, while as in the expressway in Lucknow road year plan, the expressway is 2000 kilometer. Okay, under this Lucknow road year plan, it was recommended that the NH should form a square grid of 100 to 100 kilometer. Okay, now if we talk about the how do we calculate the road lengths by the third road year formula, then certain formulas were recommended by the Lucknow road year plan. Okay, so under the Lucknow road year plan, the roads were classified into three systems, that were the primary road system, secondary road system, and tertiary road system. The primary road system were composed of expressways and national highways. Okay, whereas under the secondary road system, they were state highways, whereas in the tertiary road system, they were major district roads and
Now, major district roads, and from the total road length we have divided the summation of all this length to know about the length about the district roads and village roads. Okay, now how do we calculate or how do we go on analyzing the primary road system? Let us say, as we know that in the Lucknow road area plan, the expressway length of 2000 kilometer was already recommended. Okay, so expressways की वैल्यू 2000 किलोमीटर सेम रहेंगी. ठीक है. अब लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो टोटल एरिया जो आपका दिया रहेगा, ये टोटल एरिया ऑफ कंट्री, रिमेंबर दिस इज द टोटल एरिया ऑफ country. Okay, so let us say certain area of the country is given, and then we will divide this total area of country by 50. Okay, so total area by 50 will be the length of national highway. We will be doing a quick numerical over this so that to make the things more clear to you. Okay, now the secondary road system, in the secondary road system is calculated by the two methods. Okay, like method number one, that is the area of the state. Okay, in this is the area of the state upon 25. Okay, so area of the state upon 25 divided by 62.5 into number of towns with the population having population greater than 5000. ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होगी उनको 62.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसमें से हम जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हमने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर देंगे. अब इन दोनों मेथड से जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आएंगे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी चूजन एज द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे. ओके, फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्शरी रोड सिस्टम, दैट इज़ बेसिकली क्लासीफाइंग द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द स्टेट जितना दिया है उसको हम लोग 12.5 से, if you look at the data, there is a symmetry like 50 का हाफ 25 का हाफ 12.5. ओके, सो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे तो एरिया बाय 12.5. और सिमिलरली इन दिस वे, जैसे हमने ये पैटर्न ए फॉलो किया है, पैटर्न बी फॉलो किया, और ये क्या हो गया मैक्सिमम ऑफ A and B. Similarly, in the tertiary road system, then this is A, area upon 12.5 and 19 to number of towns and population above 5000. And इसको हम लोग इन दोनों से A और B में से जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी द टोटल लेंथ ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ओके, though some rough data is always also given in some of the books, like how do we calculate the total road length if the number of villages of towns are given, then this is 4.74 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स दिए हुए हैं. ठीक है, फाइन. नाउ approximate length of national highway in India is 50,000 kilometer, and the most accessible road, and these are the certain important questions which have been asked, so you need to go through this question, that is what is the approximate length of NH in India is 50,000 kilometer. Though this data might be possible are old. Okay, most accessible road is the village road, which is most accessible to all the road users. Okay, now let's go through let's quickly go through the question. Let us say the area of a certain district is in India is 13,400 kilometer square, and there are 12 towns. ठीक है, बोल रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डिफरेंट categories of roads to be provided in the year in the district by year 2001. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमको कहीं ये मेंशन नहीं किया कि हमको इसको लखनऊ रोड ईयर प्लान से बनाना है. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमको लखनऊ रोड ईयर प्लान से बनाना है? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें जो डाटा है इसमें लास्ट में लिखा है बाय द ईयर 2001. ओके, तो 2001 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि भाई जो 2000 ईयर वन में हमारा कौन सा रोड ईयर प्लान था, दैट वाज द लखनऊ रोड ईयर प्लान, दैट वाज ड्यूरिंग द ईयर 1981 to 2001. ओके, सो if let us say if area is given as 13,400. ठीक है,
तो हम लोग तीन क्लासिफिकेशन कर रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या था, एक्सप्रेसवेज था और आपका एनएच था। सेकेंडरी में क्या था, स्टेट हाईवेज था। टर्शरी में क्या था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स था। ठीक है, तो आइए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी में एक्सप्रेसवे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्सप्रेसवे 2000 है। ठीक है, सेकंड है आपको एनएच का लेंथ निकालना। एनएच निकालने के लिए क्या था, एरिया बाई 50। ओके, तो 13,400 डिवाइडेड बाई 50, दिस इज 268 किलोमीटर। Okay, so these are the data for the primary road system. Now talking about the secondary road system, that is composed of calculation of the state highway. Okay, तो स्टेट हाईवे निकालने के लिए क्या था, A/25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स with population greater than 5,000 minus A/50, that is the length of NH. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ए कितना है, 13,400 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 536 किलोमीटर। ओके, एंड दिस इज 62.5 नंबर ऑफ टाउन्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12 नंबर ऑफ टाउन्स माइनस हमारा ये जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना आया, दैट इज़ 268, तो ये आ जाएगा आपका 482। ठीक है, अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, इन दोनों में से हाईएस्ट है 536 किलोमीटर। ठीक है, तो एसएच का लेंथ कितना हो गया, 536 किलोमीटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दैट इज़ द टर्शरी रोड सिस्टम। ठीक है, टर्शरी रोड सिस्टम की बात करते हैं। तो टर्शरी रोड सिस्टम में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स निकालने के लिए हम लोग बात करें, अगर बाई एरिया फार्मूला से बात करें तो दिस इज़ एरिया बाई 12.5, तो इससे हो जाएगा आपका 13400 डिवाइडेड बाई 12.5 एंड दिस इज़ 1072 किलोमीटर। बाई द नंबर ऑफ टाउन्स, बाई द नंबर ऑफ टाउन्स अगर हम लोग बात करें तो दिस इज़ 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं, 12, तो हमारा हो गया 1080 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1080 किलोमीटर, तो आपकी जो एमडीआर की लेंथ हो गई दैट इज़ 1080 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स की लेंथ बताओ। ठीक है, मेजर स्केल पे हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो आपकी एनएच प्लस एसएच प्लस एमडीआर प्लस ओडीआर प्लस वीआर होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो लखनऊ रोड ईयर प्लान में कि भाई हमारी जो रोड डेंसिटी वो कितनी होगी, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, तो कितना रोड लेंथ होना चाहिए, टोटल रोड लेंथ। ठीक है, तो टोटल रोड लेंथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, 82 डिवाइडेड बाई 100 इंटू व्हाट इज़ द एरिया गिवन, दैट इज़ 13,400, इसको करेंगे तो 10,988 किलोमीटर की टोटल रोड लेंथ होनी चाहिए, जिसमें से हमारा एनएच का लेंथ आया है 268 किलोमीटर। ठीक है, एसएच का लेंथ आया हमारा 536 किलोमीटर। ठीक है, और हमारा एमडीआर का लेंथ आया है 1080 किलोमीटर। ओके, अब इसमें से टोटल में से जब हम इन तीनों का समेशन माइनस कर देंगे तो हमें जो है आपका ओडीआर प्लस विलेज रोड मिल जाएगा, दैट वुड बी 10,988 माइनस 268 माइनस 536 माइनस 1080 एंड दिस इज 9104 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपका कैलकुलेशंस या इस तरह से जो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो हम लोग बात करेंगे कि रोड पैटर्न्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो रोड पैटर्न्स बेसिकली आपके सिलेबस में 6 तरह के रोड पैटर्न्स है। ठीक है, दो एग्ज़ाम में एकेडमिक एग्जामिनेशंस में दो बनाने के लिए आ सकते हैं, बट कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 2 या 3 जानने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको जानना है दैट इज़ रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, इसके डायग्राम को आप रेफर कर सकते हैं अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में। आई हैव नॉट ड्रॉन ओवर हियर, जस्ट इट कंज्यूम्स द टाइम। ओके, सो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो किस सिटी में इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज़ इन द सिटी चंडीगढ़, जहाँ पे वेल डेवलप्ड या वेल प्लान्ड रोड्स हो। ठीक है, फिर रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न क्या होता है, जैसे ये है। ठीक है, लेट अस से दिस इज़ द सेंट्रल एरिया। ठीक है,
तो दिस इज़ दी यू कैन से लाइक द रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में जो यहाँ पे रोड बनेंगी दैट इज़ दी रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। फिर रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मैनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज कि जो दिल्ली में हमारा कैनॉट प्लेस है, ठीक है, सीपी, वो वहाँ पे कौन सा रोड पैटर्न हमारा इम्प्लीमेंट होता है। सो दैट इज़ बेसिकली रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। फिर फोर्थ है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जैसा कि हमने अभी थ्योरी में ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि नागपुर रोड ईयर प्लान में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रोड पैटर्न यूज़ होता है, दिस इज रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। फिफ्थ इज hexagonal pattern and sixth is minimum travel pattern. Okay, now talking about the highway alignments, many times this question has been asked ki what are the various factors which control the alignment of the highway, then you just remember the points that are the obligatory, what are the obligatory points, what are the traffic parameters, geometric design, economic and other consideration are the points which are considered or which on which the alignment depends. Okay, now talking about the various types of engineering surveys, let us say if we have to define a certain location for the highway, then on a major scale this four uh, rough surveys are calculated, that is the map study, reconnaissance survey, preliminary survey, final location and detailed survey. So what you have to do in this, you just have to remember the sequence order. Okay, many times question has been asked on the engineering surveys regarding the serial order. Okay, कि मैप स्टडी पहले है कि रिकॉनेंसा है, या ये चारों दे देगा, ठीक है, जम्बल्ड करके, और बोलेगा कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस: मैप स्टडी, रिकॉनेंसा सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड द फाइनल लोकेशन एंड द डिटेल्ड सर्वे। ओके, नाउ talking about the what are the various steps in new project work, this question is already been asked in the various examination, like what are the steps. Then if you to look at these steps, then map study is the first step, reconnaissance survey, thereafter preliminary survey, location of the final alignment, detailed survey, material survey, design, earthwork, pavement construction and construction control. So this is very important. Instead of learning this, you should you should learn this, क्योंकि ये चारों जो देखेंगे ऑलमोस्ट वो स्टार्टिंग में सेम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल इज द सैचुरेशन सिस्टम ऑफ स्टडीज। ओके, तो अंडर द सैचुरेशन सिस्टम व्हाट डू वी कैलकुलेट, दैट इज दैट विच रोड हैज़ मैक्सिमम यूटिलिटी, ओके, और विच सर्व्स द मैक्सिमम यूटिलिटी टू द रोड यूजर। जो रोड यूजर्स हैं वो मैक्सिमम किस रोड्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो under the maximum utility per unit length is calculated under the saturation system of studies, and the factors which are considered for calculating the utility per unit length is the पॉपुलेशन सर्व बाय द रोड नेटवर्क, कि कितने पॉपुलेशन को वो सर्व कर रहा है, एंड दी प्रोडक्टिविटी यूनिट्स, ठीक है, कि वो नेटवर्क जो है कितने रोड नेटवर्क कितने प्रोडक्टिविटी यूनिट्स को सर्व कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग सर्टेन वेटेज फैक्टर लेते हैं। लेटर से कि अगर पॉपुलेशन हमारी 500 से कम है तो हमने उसको 0.25 दिया, 501 से 1000 है तो उसको 0.5 दिया, 1001 से 2000 है तो उसको 1 दिया, 2001 से 5000 है तो उसको दो दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल के लिए हम लोग लिस्ट में क्या होता है 1000 टन पे कितना होता है, लेटर से 1 हो गया। इंडस्ट्रियल के लिए 1000 टन पे 1 हुआ। तो यूजुअली अगर एग्ज़ाम में डाटा दिया होगा तो ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में डाटा दिया रहता है, बट ऑन अगर नहीं दिया है तो ऑन अ रफ स्केल आप ऐसा एज्यूम करके डाटा जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम्स में, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि लेटर से 3 रोड लेंथ्स दे देंगे, दैट इज से यू कैन से लाइक पी रोड लेंथ है, क्यू रोड लेंथ है, टोटल रोड लेंथ दे दी 300, 400 और 500 दे दिया, ठीक है। लेट एस भी है, मान लेते हैं 550 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाउन्स दे दिया, ठीक है, और कितने पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, ठीक है। लेटर से 1001 से 2000, ठीक है, 2001 से 5000, 5001 से 10,000, ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। आई एम राइटिंग ऑन अ रफ स्केल, ठीक है। 160 है, 80 है, 30 है, 60 है। फिर टोटल एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दिया है, मान लेते हैं 200 दिया, एंड दिस आर इन दी 1000 टन्स, ओके। तो अगर हमको पहले सबसे पहले इसकी यूटिलिटी यूनिट निकालनी होगी, ठीक है, तो पहले पी की यूटिलिटी यूनिट निकालने के लिए पहले हम एक रफ आइडिया लगा लेंगे कि भाई हम क्या पॉपुलेशन यूनिट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट से जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको हम लोग मान लेंगे 0.25, उससे ऊपर हम लोग 0.50 मान लेंगे, उसके बाद हम लोग 1.00 मान लेंगे, उसके बाद 2.50 मान लेंगे, ठीक है। तो
हम लोग ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और 160 इंटू 0.25, 80 इंटू 0.50 एंड 30 इंटू 1.00 एंड 6 इंटू 2.50 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो लेटेस्ट से कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 इंटू 0.25 प्लस 80 इंटू 0.50 प्लस 30 इंटू 1.0 प्लस 6 इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ से हम ये यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इनका समेशन करके फिर इसको टोटल रोड लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट से हमारा ये जो डाटा आ रहा है लेटेस्ट से 500 आ रहा है, तो 500 से हम इसको 300 से डिवाइड कर देंगे। लेटेस्ट से दिस इज सर्टेन वैल्यूज, लेटेस्ट से 1.67 समथिंग कुछ आया, ठीक है। सिमिलरली हम बी का कैलकुलेट करेंगे, क्यू का कैलकुलेट करेंगे, आर का कैलकुलेट करेंगे, एस का कैलकुलेट करेंगे। अब इन तीनों में से लेटेस्ट से कि हमारा पी का जो यूटिलिटी यूनिट पर यूनिट लेंथ है लेटेस्ट से 1 आया, क्यू का 2 आया, आर का 3 आया, एस का 4 आया, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट इज़ सर्विंग द मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम रोड सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली ऑन दिस सेम वे हम लोग यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल यूनिट्स जो है हमारी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, यहाँ पे अगर 1000 टन्स के बेसिस पे है तो यहाँ पे 200 टन दिया हुआ है, तो 1000 टन पे हम अगर एक ले रहे हैं तो 200 टन डाटा है, दिस वुड बी 0.2, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉड्यूल 1। थैंक यू।